अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कुछ दिनों के गैप के बाद एक नई वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और इसमें एक मिसिंग टॉपिक था हमारा बेस थ्योरम का, उसको कोशिश करूँगा कि एक्सप्लेन करूँ। हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको याद होगा कि हम अपनी सैम्पल स्पेस का साइज छोटा कर देते थे, हम कंडीशन से स्पेसिफाई कर देते थे एंड वी यूज टू स्पेसिफाई द कंडीशंस टू सर्व आवर पर्पसेस, और उसमें हमें बेटर रिजल्ट्स के चांसेस थे। और ये सारा कुछ हम करते कैसे थे? हम इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के बाद कुछ करते, ये सारी चीजें करते थे। तो ये बेस थ्योरम में हम ये जैसे इन मैनी सिचुएशंस द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट डिपेंड्स अपॉन व्हाट हैपेंस इन वेरियस इंटरमीडिएट स्टेजेस, कि जो एक्सपेरिमेंट है उसमें अगर जो इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट हम देखना चाह रहे हैं इस सारे काम में। ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल की मदद से हम चीजों को करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल में आप गौर कीजिए, द कंप्लीशन ऑफ अ कंस्ट्रक्शन जॉब में बी डिलेड बिकॉज ऑफ अ स्ट्राइक। The probabilities are 0.60 that there will be a strike, 0.850 that the construction job will be completed on time if there is no strike, and 0.35 that the construction job will be completed on time if there is strike. What is the probability that the construction job will be completed on time? अब इस चीज की हमने probability compute करनी है, तो इसका solution देखते हैं। Now, if A is the event that the construction job will be completed on time and B is the event that there will be strike, तो अब हम गौर करते हैं जी what are the chances of strike? 0.60. What are the chances that event A, that means the construction will be complete if they are on time if there is no strike? That's 0.85. What are the chances that the construction task will be completed if there is strike? 0.35. अच्छा, आपने एक चीज गौर करनी है कि अगर आपका यूनिवर्सल सेट को मैं नाम दे दूं U का, और A उसका सबसेट हो, B भी उसका सबसेट हो, तो जो A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों, इन दोनों की इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगी और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हम इनको कहेंगे। और जब इवेंट्स आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों तो फिर इंटरसेक्शन में कुछ नहीं होता, फिर जो यूनियन वाली प्रोबेबिलिटी है ये सम में के फॉर्म में आ जाती है। सो दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और फिर ये आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला वो जो रूल है उसको आप अप्लाई करके ये आप लिख देंगे जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी डैश। अच्छा, अब इसमें हमने करना क्या है जी? इसमें हम सिर्फ सिंपली वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और जब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। अब ये जो हमने एग्जांपल की, इसमें दो चांसेस थे कि स्ट्राइक होगी कि स्ट्राइक नहीं होगी, बी और बी डैश। लेकिन अगर आपके पास चांसेस बढ़ जाएं फिर क्या होगा? तो ये जो थ्योरम 12 है ये हमें बेस थ्योरम में हमने जाके इसको यूज करना है। तो जो हम अब तक जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं ये चीजें हम इसलिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं बेस थ्योरम के प्रूफ को समझने के लिए। तो पहले आपके पास दो सिचुएशन थी कि स्ट्राइक होगी या स्ट्राइक नहीं होगी। अगर आपके पास के पॉसिबिलिटीज हो जाए, मतलब जो जितने भी चांसेस है उनको अगर आप के सबसेट्स में डिवाइड कर दे, B1 B2 एंड सो ऑन Bk कॉन्स्टिट्यूट द पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस S एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ Bi, और ये जितने भी इवेंट्स हैं सब के होने के चांसेस 0 से ज्यादा हो, ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0 for I from 1 to k, then for any event A in the sample space S, probability of A is equal to this summation. ये जो पीछे हमने ये काम किया ना, probability of A में हम क्या कर रहे थे? दो चांसेस थे हमारे पास, B और B डैश, इन दोनों को सिंपली ऐड कर दिया था, B और B डैश को। तो अब ये या B के चांसेस थे यानी कि स्ट्राइक होगी, या B कॉम्प्लीमेंट स्ट्राइक नहीं होगी। अगर K हो, K वाली सिचुएशन हो, तो फिर क्या करेंगे? आप उन सारी चीजों को ऐड अप कर देंगे एंड दिस समेशन इज I फ्रॉम 1 to k प्रोबेबिलिटी ऑफ Bi डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन Bi। और इसका अगर हमें प्रूफ करना पड़े तो हम मैथमेटिकल इंडक्शन से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में ये सारा कुछ कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और इसी प्रॉब्लम को एक और जाविये से देखते हैं। द मेंबर्स
of a consulting firm rents cars from three rental agencies. 60% from agency 1, 30% from agency 2, and 10% from agency 3. If 9% from the car of the cars from agency 1 need an oil change, 20% of the cars from agency 2 need an oil change, and 6% of the cars from agency 3 need an oil change, what is the probability that the rental car delivered to the firm will need an oil change? अच्छा, अब ये थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है उसको हम एक और डिफरेंट वे में देखने की कोशिश करते हैं। अब if A is the event that the car needs an oil change and B1, B2 and B3 are the events that the car comes from rental agencies 1, 2 and 3, then we have a very straightforward description. What is the probability that the car comes from the agency? This B1 is the event that the car comes from rental agency 1. So this probability of B1 is 0.60. Probability of B2, this is 0.30, because this 60% means 0.6, 30% means 0.3, and probability of B3, that is 0.10, and probability of A given B1 is 0.09, and probability of A given B2 is 0.20, and probability of A given B3 0.60. And then you can, using this theorem 12, you can compute the probability of A. Excuse me. So now when we go to this theorem 12, which is the so-called, which is the Bayes theorem, and now what we do is we change, I'll elaborate it a little from what is written on this bottom with reference to this example. Suppose that we are interested in a different question now. If the rental car delivered to the consulting firm needs an oil change, what is the probability that it came from agency 2? Now we have changed our question. Now we are interested in a different question, that the rental car delivered to the consulting firm needs an oil change. What are the chances that it came from some specific agency? The answer to this kind of questions comes from the theorem, which is Bayes theorem. And so that means you have a car at hand and it needs an oil change, and we want to identify from the information we have that where, from which agency this car came from. Okay, now please look at this theorem 13, and now this theorem 13 states that if B1, B2 and Bk constitute a partition of the sample space S, and probability of Bi is different from 0 for all for I from 1 to k, then for any event A in the sample space S such that probability of A is different from 0, then the probability of Br given A is equal to probability of Br times probability of A given Br divided by this summation I from 1 to k probability of Bi times probability of A given Bi, and this R can be anything from 1 to k. So what we are trying to say, in other words, if we describe the same, the probability that an event A was reached via rth branch. Now please look at this tree diagram for this Bayes theorem. Now we reach this stage A, we reach this event A, and we have these R options. So the probability that the event A was reached via rth branch of tree diagram, given that it was reached via one of its k branch, मतलब जो event A होना है उसने इनमें से किसी एक branch को use करते हुए होना है. And what are its chances? The chances are that this is this ratio. This is the ratio of the probabilities associated with rth branch to the sum of the probability associated with all k branches of the tree. Okay, proof देखते हैं इसका. Probability of R, probability of BR given A is
दिस सिंपल फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आर डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये वाला है, इसकी वैल्यू हम पीछे थ्योरम 12 में कंप्यूट कर चुके हैं, तो वो यहाँ पे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लेस करते हैं। In accordance with the definition of conditional probability, we have to substitute। अब ये जो ऊपर वाला आपका एक्सप्रेशन है, ये वाली जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आर, इसकी जगह पे ये हम लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए गिवन बी आर, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है उसकी जगह पे हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये आपका जो थ्योरम है ये पिछले थ्योरम की मदद से प्रूव हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये इवेंट ए होना है तो इन आर्थ ब्रांचेस में से किसी एक के जरिए अगर इसने होना हो तो आर्थ ब्रांच के जरिए इसके होने के चांसेस क्या हैं, वो चांसेस हैं ये वाली प्रोबेबिलिटीज डिवाइडेड बाय दिस समेशन। ओके, तो बेस थ्योरम हमारा इस चैप्टर का पेंडिंग था, वो मैंने आपको करवा दिया। तो अब हम अपने बाकी के जो रूटीन की हमारी लेक्चरिंग है, हम उसमें अब बाकी जितनी भी आपकी ये जो होंगी जो बाकी के लेक्चर्स हैं उनको हम उसी सिलसिले से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।